हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम वीडियो देखने वाले हैं 15 थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट इंडिया। और इस तरह की वीडियोस मैं पता नहीं कितनी, आई थिंक 1 2 3 पता नहीं कितनी बार कर चुकी हूँ। और फिर भी मुझे रिकमेंड हो रही थी ये वीडियो बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा क्यों नहीं करते हैं। और वैसे भी इस तरह की वीडियोस देख के पता चलता है कि मैंने अभी तक क्या लर्न किया है या क्या लर्न नहीं किया। और आजकल मैं जो इंडियन कल्चर है उसकी क्लासेस ले रही हूँ और आपको आइडिया भी नहीं मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, वो भी इटालियन में। वो इतना फ़नी साउंड करता है क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे खुद बताई हुई हैं और वही चीज़ें थोड़ी रिपीट हो रही होती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है सुन के वो इटालियन एक्सेंट में वही नेम सारे मे बी मैं किसी वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगी, बट इस वीडियो में आई थिंक कि वो चीज़ें होंगी एटलीस्ट 2-3 तो होनी चाहिए जो मुझे नहीं पता थी, वरना कोई फ़ायदा नहीं देखने का। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। 15 things you didn't know about India. Welcome to alux.com, the place where future billionaires come to get inspired. Hello Aluxers, and welcome back to another fascinating video. Today we're looking at incredible facts you didn't know about the 7th largest country in the world, India. With a population of over 1 billion people, India is one of the most influential and powerful countries in the world. Its cultural history is particularly complex and detailed, spanning 4,500 years of predominantly Hindu philosophy and theology. Thousands of years later, modern India is profoundly different, with its own colossal film industry, a diverse population, and an astonishingly big workforce. Because alux.com is dedicated to becoming the world's best resource on the most interesting countries and destinations, we couldn't wait to bring you 15 things you didn't know about India. Number 1. Bollywood's highest-grossing film made 27 times more than Hollywood's highest-grossing film. Yep. For every 600 films Hollywood produces, Bollywood will make 1,000. Yeah. They're the most profitable films, too, when you compare the numbers. Hollywood's highest-grossing film was 2009's Avatar, which made $2.8 billion at the box office. In stark contrast, the Bollywood film 3 Idiots brought in $76.81 billion. What? Now that's a profit. Number 2. Shampoo was invented in the 16th century, India. Derived from the Sanskrit champu, which means massage, the concept of shampooing was invented in India in the 16th century. Herbs and natural ingredients were used then rather than today's combination of modern chemicals and fragrances. In particular, gooseberry, sapindus, and fruit pulp. When colonial visitors came to India, they brought the practice of shampooing and hair washing back with them to Europe. Number 3. Diamonds were first mined in India, and it was the world's greatest producer. India was the most productive diamond mining country in the world until diamonds were found in Brazil in the 18th century. There are now 3 active diamond mines in India, and the famous Kohinoor diamond was found in the 13th century. Oh, yeah. The 793-carat stone went from person to person and was eventually acquired by Queen Victoria during the British Raj in India. Yeah. Number 4. Elephants in Kerala can treat themselves to a spa day. Thorkata Elephant Yard Rejuvenation Center provides elephants with baths, massages, and soothing pamper sessions. The spa caters to 59 clients and is a way of giving back to the sacred animal. Elephants play an important role in Kerala's temple processions and are a significant feature of the region, so they deserve a massage every now and then. Number 5. The largest religious gathering in India can be seen from space. Kumbh Mela is a Hindu pilgrimage which takes people to the banks of the Ganges every 12 years. The major event involves ritualistic bathing, devotional singing, religious discussion, and feeding the poor. The attendance figures had to be capped at 75 million, making it the largest pilgrimage on Earth. Number 6. Ancient Indian civilization is the oldest in the world. We often look to ancient Greece and ancient Egypt, but Indian civilization dates back to 2400 BC, when it was split into 16 monarchies known as the Mahajanapadas. There are even authenticated human remains that date back to 30,000 years in South Asia.
The oldest Hindu texts were written between 2000 and 500 BC, as well as the first texts on science, medicine, and astronomy. We actually owe the number 0 to Indian mathematics, who created the concept. Number 7. India is home to every major world religion and doesn't have a national language. Hinduism, Christianity, Buddhism, Islam, and Sikhism all have a place in Indian society, with the most dominant being Hinduism and Islam, covering 80% and 14% of the population, respectively. Judaism has existed in India for the last 2,215 years, and some of these smaller religions also featured, including Jain, Zoroastrian, and Baha'i. India also doesn't have a single national language because 1,652 dialects are spoken across the different regions. Number 8. A polling station is set up for just one voter in Gir Forest at every election. Every election, Marant Barandas Deshandas gets his local polling station entirely to himself because he's the only resident of Gir Forest. He's been voting in Indian elections since 2004 and never misses one now that he has his own personal polling station. Mahant is the caretaker for the one temple in the forest in Gujarat, a home he shares with the rare Asiatic lion. Number 9. The Indian government has used scaffolding to hide the Taj Mahal when airstrikes are predicted. During the Second World War and the Indian-Pakistan Wars, scaffolding was put up around the distinctive domes of the Taj Mahal to make it less obvious from above. They feared strikes by the Japanese Air Force during World War II, so hid their most famous landmark. More recent threats to the Taj Mahal include the rising levels of the Yamuna River, which has cracked the tomb underneath the structure. There have been predictions that the tombs could collapse at any time. Check out our video 15 most expensive man-made attractions in the world to find out what ranks along the stunning Taj Mahal. Number 10. Indians invented navigation, yoga, the world's cheapest car, and thorium-based nuclear power. Indian society can take credit for some of the most important inventions in the world. They were the first to create the concept of navigation, over 6,000 years ago, using rivers and seas. Yoga was created 5,000 years ago and has roots in Hinduism, Buddhism, and Jainism. The world's cheapest car, the Tata Nano, which costs around 100,000 rupees, the equivalent of $1,400, and India is the home of the first next-generation thorium reactor. The country is aiming to produce 30% of its electrical power with thorium by 2050. Number 11. You can stay at the former Indian royal residence for $88,000 a night. If you want to stay at the lap of luxury, forget Paris and forget Dubai. India is the home of the most stunning palaces in the world. Once the home of the Maharajas, there are opulent palaces throughout the country, with some dating back hundreds of years. The Kumarakam Lake Resort hosted Prince Charles's 65th birthday, and the 450-year-old Samod Palace in Jaipur has hosted famous faces from all over the world. Number 12. King Jai Singh of Alwar snubbed Rolls-Royce in the best possible way. India has a long and colorful history of quirky monarchies and extravagant kings and queens. The King of Alwar in northeast India was insulted by a Rolls-Royce salesman when he visited a showroom in London. A very proud man, he ordered a whole fleet of Rolls-Royce cars and gave them to the city's waste department so they could use them to transport rubbish throughout the city. Number 13. 1 million Indians are millionaires. What? India has one of the most dramatic wealth gaps in the world, with 35% of the country living below the poverty line. Those who live way above it live a very different kind of life. The richest Indian in the world is Mukesh Ambani, who has a net worth of $53 billion. The 59-year-old made his money in the oil and gas industry, and his billion-dollar home recently made headlines because he chose to build a 27-story skyscraper instead of a sprawling mansion. Number 14. The first account of plastic surgery was found in an ancient Sanskrit text. One of the first medical texts was the Sushruta Samhita, which can be dated back to the 6th century CE. It's one of the very first examples of a medical text and discusses surgery, incisions, skin grafts, and nose reconstruction.
Britain's first nose job wouldn't be performed until 1814, a worrying 80 years before the Sushruta Samhita would be translated. Number 15. Oh, 15 One of भी है. India's most extravagant weddings caused controversy because it was too extravagant. कौन सा? Lasting 5 days and costing $74 million, the wedding of the daughter of a prominent businessman made headlines in 2016 for all the wrong reasons. The $2.5 million wedding sari, Bollywood royalty in attendance, and gold Bangalore palace setting was denounced as an obscene display of wealth. Millions of Indians live in poverty, so the wedding was criticized for being in poor taste. There are many stereotypical images of India, but there's so much more to this incredible country than many of us know. The center of many industries and the world's biggest democracy, Oh, good India has influenced art, literature, science, and medicine potentially more than any other nation. If you could take a trip to हे गाइस, ये थी वीडियो. कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई. स्ट्रेंजली फिर भी मुझे नई चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चल गई थी, और जो मुझे चीज़ें ऑलरेडी पता थी उनकी भी डिटेल्स इसमें थोड़ी डिफरेंटली एक्सप्लेन थी, तो मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा. आप लोग बताओ, आपने तो पता नहीं ये देख ली होगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ भी देख ली, अच्छी किया. और पता नहीं मैं वीडियो के ड्यूरिंग क्या हो रहा था, मेरा हेडफोन निकल रहा था, मेरा इयररिंग निकल रहा था. एनीवे, मैं एडिट नहीं करूँगी, कोई बात नहीं. मैं चाहती थी फर्स्ट इंप्रेशन हो. और सबसे पहले शुरू करते हैं वो चीज़ जो स्पा वाली थी. ओह माय गॉड, इतनी क्यूट चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी. देखा था एलिफेंट कितने चिल मार रहे थे, लाइक वो इंजॉय कर रहे थे. मुझे इतना क्यूट लग रहा था. मुझे हमेशा बहुत तरस आता है जो एनिमल्स होते हैं स्पेशली, क्योंकि बोल नहीं सकते. और मुझे बहुत ही पसंद है वो सेक्रेड. आई नो कि उसकी सेक्रेड वैल्यू है एलिफेंट की भी. इंडिया में काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनकी सेक्रेड वैल्यूज़ है, और मेरे को बहुत ही लाइक मुझे एक तरह से क्यूट लगता है. और मुझे यकीन है कि वहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली माहौल होगा. वो जैसे लेते हुए थे उसको मसाज मिल रहा था. कुराला को इस बात पे ये नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए. कितनी क्यूट चीज़ है. उनको मसाज में थोड़ा ऐसे गिर रहे थे, और उनको आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जो नहीं भी वहाँ पे जॉब करता होगा उसको भी कभी कभी जाना चाहिए और उनको मसाज देना चाहिए. एक तरह से ये भी ना चैरिटी, बट ये भी एक अच्छा काम है ना. सुकून मिलता है करके. कभी कभी वो चीज़ें करके और भी सुकून मिलता है जिसके तुम्हें पता है कि वापस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम कर रहे हो और वो अच्छी चीज़ें करने के लिए, उसमें जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है. गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब वो बता रही थी कि एवरी 12 ईयर्स एक मेला था, रिलीजियस मेला. और वो उस नाम भी नहीं बोला था, मुझे पता था कि वो कुंभ मेला है. यस, आपको मैं शायद मैंने ड्यूरिंग वीडियो बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं कल्चर जो इंडिया का पढ़ी उसमें भी कुंभ मेला का जिक्र है, और उसका लाइक बिहाइंड स्टोरी भी थी. और वो इतनी चीज़ें थी गाइस, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और इतना कुछ है. और अभी हम लाइक थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो मैं सोच रही थी आगे क्या बताएंगे. और ये कल्चर 1 है, कल्चर 2 भी है, पता नहीं उसमें क्या होगा. मे बी वो रिसेंट कल्चर की बात होगी. ये प्रोपियो हम हज़ारों साल पहले की चीज़ें पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में. और काफ़ी सारी चीज़ें जो वो मेरी प्रॉफ बोलती है इटालियन में, वो ऑलरेडी आप लोग मुझे हिंदी में टाइप करके बता चुके काफ़ी सारी चीज़ें. लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना थोड़ा डिफरेंट होता है. यहाँ पे तो हम आराम से इंजॉय करके पढ़ते हैं, फ़न करते हैं. लेकिन वहाँ पे तुम्हें पता होता है कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, और तुम्हें वो हर चीज़ याद रखनी पड़ती है. तुम्हें टाइम भी याद रखना पड़ता है कि क्या हुआ है. और मुझे वैसे लगता है जब रिलैक्स होकर कोई इंसान चीज़ सीखता है वो तो उसे याद ज़्यादा रहती है. पता है जब प्रेशर होता है कि ओह लाइक एग्जाम देना, वो काफ़ी सारी चीज़ें तुम थोड़े टाइम बाद भूल जाती. मे बी सारी नहीं भूलेंगी ऑब्वियसली, एसेंस याद रहेगी, बट वो अराउंड जिसकी डिटेल्स होती है छोटी छोटी, वो तुम भूल जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम एक तरह से वो एक ड्यूटी कर रहे हो. एनीवे, मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ वो कल्चर इंडिया का जो क्लासेस है. गाइस, जो गाड़ी है नानो कार, आप में से किसी के पास है? वो नानो इटालियन में नानो का मतलब होता है लाइक जो छोटा होता है, लाइक जिसकी हाइट छोटी हो बहुत ज़्यादा, और या फिर कुछ छोटी सी चीज़ उसको कहते हैं नानो, या फिर नाना लड़की के लिए. और उसका नाम भी नानो है आई गेस के. ऊपर से उसकी वो चीपर है, तो इसका मतलब वो छोटे साइज़ में होगी. मुझे छोटी गाड़ी इतनी पसंद है. आपको शायद पता नहीं, यहाँ पे भी इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कार का. आपने देखा वो जर्मन कार्स आई थिंक, वो गूगल करना, वो कुछ ज़्यादा ही छोटी है. तो अब पता नहीं नानो कार जो है मुझे गूगल करना पड़ेगा वो कितनी छोटी है. लाइक वो स्मार्ट कार जितनी है या उससे थोड़ी बड़ी है. मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी उसका डिज़ाइन, पर
उसका शायद वो डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ है कि तुम्हें बड़ी लगती है, क्योंकि $1400 में इतनी चीप में कार कैसे मिल सकती है। ऑनेस्टली मैं 600 ले लेती, 600 लेके मैं क्या करती, बट एक ले लेती एटलीस्ट। और आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हो, जब एक बार मुझे शायद आप लोगों ने बताया था, आप लोगों ने कहा था कि आईफोन लेने से बेटर एक बंदा कार ले ले, और तब मैंने कहा था कि मुझे याद है मैंने वो पढ़ा था और मैंने कहा था ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है आईफोन, कार कैसे मिलेगी। और अभी मुझे जब वो प्राइस उन्होंने